You will never hear that in some human a mother has given birth to a donkey. Not possible. A donkey is giving birth to a donkey, a horse, a mare to a horse or a mare, a chimpanzee to a chimpanzee, right? A cow to a cow, a giraffe to a giraffe, a tiger to a tiger, a bear to a bear, and a man to a human being is coming from a human being. There is such an order and discipline everywhere. Who is responsible for this discipline? Who is responsible for this order? We call it Prakriti or Mother Nature. Who runs the nature? The divine consciousness, simply Lord, God, Bhagavan, Prabhu, Paramatma, whatever word you wish to use, you can use that. अगर हमारी आंखें ये सब देखें और समझें तो हम ये जो मैं का राग अलापते रहते हैं ये हम नहीं अलापेंगे. जो सारी सृष्टि को चला रहा है वो तेरी एक जिंदगी को भी चलाएगा. जब हमारे अंदर ये विश्वास आ जाता है तो इसको हम कहते हैं भक्ति. और सारी दुनिया की जो काम काज फंक्शनिंग चल रही है वो जिस प्रकृति के जिस बुद्धिमत्ता से चल रही है उस विज्ञान को जब हम समझते हैं तो विज्ञान का ज्ञान भी तुम्हारे मन को विश्राम में ले आता है. अब आपके मन में अगर भक्ति है तो आपकी सोच पर लगाम अपने आप लग जाएगी. देखो, जब आप मां के गर्भ में थे तो क्या तुम्हारी मां सोच रही थी कि अच्छा आज ना बच्चे का नक बनाती हूं, कल होंठ बना दूंगी, फिर उसका दिमाग बना दूंगी? हैं? क्या ऐसा होता है? Is the mother planning and thinking what kind of nose or lips or head or arms or heart or lungs the baby should have? The fetus is getting formed naturally. The progression is happening in first trimester, in second trimester, in third trimester. There's a system and the system is being followed. Mother is just supposed to eat very good. That's her job. And the bigger job is to keep her mind calm and relaxed. Now, not many women understand this one particular part, and I wish to say something about it. The microbiologists did a research of 4 generations of women. The first one was in depression. So her chromosome was tested and the chromosome was dented. She gave birth to a girl became woman, the woman gave a child. Then this child's chromosome was taken, observed, even that is dented. Then the third generation happened, the sample was taken, tested in the lab, even this chromosome is dented. So the conclusive study is that if mother remains in depression, then not only her child, but even her grandchild will be born with the dented chromosome, which means this child is now prone to depression, ADHD, or any mental disorder, and will have a free share of depression. Why? Because the very being, the chromosome is dented, so that gets passed on from generation. So they studied 4 generations. माँ अगर चिंता में, तनाव में है, तो उसके बच्चे के जीव कोशिकाओं में ये एक खराबी आ जाती है. अब इसकी बच्ची वो भी डिप्रेशन में, तनाव में. फिर उसकी पोती हुई तो पोती का क्रोमोसोम भी डेंटेड, वो भी डिप्रेशन में. फिर उसकी पड़ पोती हुई, उसका सैंपल लिया गया तो वो भी डिप्रेशन में.
अब सोचने की बात यह है कि कोई भी स्त्री जो गर्भवती है, हमारे ऋषियों ने ये बात कही, हमारे आयुर्वेद आचार्यों ने ये बात कही कि वो जो गर्भवती है वो बहुत प्रसन्न रहनी चाहिए, उसको अच्छा अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए और वो जो कहे उसकी हर बात माननी चाहिए. This was the advice given by the sages. In general principle, any woman who is pregnant, make her happy, and she was advised to read Purana or Shastras and be in company of holy men and women. To be calm, and the husband and the mother-in-law and the whole family was asked to keep her happy. So whatever she says, make sure that that is followed. Why? Because without all these technical gadgets, the rishis understood the mechanism of mind and body. If mind will be in depression, then the baby will get affected. So we don't just get the body formed in the mother's womb, we are also receiving her mind status, that too is getting transferred to us. मन अगर अशांत और दुखी और परेशान रहेगा तो इस बच्चे का जो दिमाग बन रहा है उस दिमाग में ही दोष भी बन जाएगा. इसलिए महात्माओं ने कहा जब भी कोई स्त्री गर्भवती हो तो वो अधिक समय संत महात्माओं का सत्संग करे, अच्छे लोगों की संगति करे, विद्वानों की संगति करे, ज्ञान का शास्त्र कोई पढ़े, नाम जप करे. और आज की जो शुरुआत हमने करी, मन तू सिमर ले राम, राम सुमिरन कर. मैंने ये बात बहुत बार कही है कि हर मंत्र एक वाइब्रेशन का एक फ्रीक्वेंसी है, सेट ऑफ अ वाइब्रेशन. आई वॉज जस्ट रीडिंग, अभी लेटेस्ट एक ब्रेन सर्जरी हुई है जिसमें नाइफ इस्तेमाल नहीं हुई है, डॉक्टर ने स्कैल्पेल यूज नहीं किया है. एमआरआई और अल्ट्रासाउंड से गाइडेड हेवी साउंड फ्रीक्वेंसी वाज यूज्ड टू सेट द ब्रेन इनटू ऑर्डर, to kill certain parts and to activate certain part. It was an MRI guided surgery done with the sound frequency. This happened here in USA. कोई कट नहीं, कोई चीरा नहीं है, कोई शरीर में जरा सा भी मैंने 1 मिलीमीटर का कट भी नहीं लगाया गया. ये ब्रेन की सर्जरी थी. ध्वनि साउंड के साथ अगर सर्जरी हो सकती, पहले होती थी लिथोट्रिप्सी, अब दिमाग की सर्जरी भी हो रही. मैं फिर कहूंगी, हमारे महात्माओं ने और ऋषियों ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था कि अगर विशेष ध्वनि का आकार बनाया जाए तो वह ध्वनि हमारे शरीर और हमारे मन को सुधार सकती है, मन को शांत कर सकती है और शरीर को स्वस्थ कर सकती है. So what is a mantra? Mantra is a set of very well defined and designed sound frequencies which will work on your body, brain and mind. Hence it becomes important to do a mantra every day. And especially if a woman is pregnant, she should do that. Because now she has a responsibility of another being in her. She's not just alone. She's just not alone. भय मन में जो बनते हैं वही भय आपके शरीर में भी बन जाते हैं. और आज जिस मंत्र के साथ हमने शुरुआत करी है, राम, राम मंत्र की फ्रीक्वेंसी ऐसी है
कि अगर आप उसको सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो जो भय की गांठें आपके सोलर प्लेक्सिस में बनी हैं वो गांठें खुलने शुरू हो जाएंगी. Your fears get stored in your solar plexus area, in your stomach. The area in between navel and your ribs. नाभि और ये आपके जो हड्डी है, इस हड्डी के मध्य की जो जगह है, ये आपके भय का स्थान है. ऐसा करो ना, कभी किसी राइड पे बैठे हो. Have you been on a ride? तो जब वो ऊपर से नीचे आता है तो कहाँ महसूस कुछ कुछ होता है? हाँ, कहाँ महसूस होता है? पेट में. तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है. जब आपको किसी ने डराया या आप जब डर गए या कुछ घटना ऐसी घट गई जब आपका मन भय में आया, भय मन में आया पर गांठ उसकी शरीर में बन जाती. और यही भय की गांठें, गांठें माने नॉट्स, these knots of fears in your body will derange your digestive system. And now science says that brain is not only here, a big part of brain is in your intestines. Every part of your body, every cell actually has its own brain. So when you are in fear, you are affecting your body and you are creating those knots in your body, and the more knots of fear are there, the more troublesome your mind will remain. So again a vicious circle. भय जो आपके शरीर में बना वो आपके मन को बिगाड़ता है, अस्थिर करता है. जितना मन अस्थिर होगा उतना भय आपका बढ़ जाएगा. ऐसे में आज आपको एक सूत्र मैं दे रही हूं, और ये सूत्र है कि आप बैठ करके राम मंत्र का उच्चारण करें, राम शब्द के साथ एक्सपेरिमेंट करें और इसे कुछ समय लगातार करते रहें. आप फिजिकली इन गांठों को खुलते हुए महसूस करोगे. To say that this is something very, very in the zone of observation. If you do the right experiment, you will feel the opening up of these knots, and your system, your physical system will get more free, liberated from that fear, and that will have a greater impact on your mind. So when you do the Ram mantra, not only your mind is getting pacified, relaxed, but also your body is getting that right sound frequency. And now this is, like I would say, a spiritual surgery happening, and you are the surgeon and you are healing your own body. ज्ञान की ये महिमा देखिए. आप खुद अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, आप खुद अपने शरीर को एक ऑर्डर में ला सकते हैं, और इसमें सर्जन कोई बाहर का नहीं है, तुम खुद हो. करोगे भी तुम, लाभ भी तुमको है. तो अब इस लाभ को लेने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, have a bowel movement, very important. 2, then take your bath. 3, then facing east or north. Sit down with your spine, head, neck straight. Breathe in deep, exhale deep for at least 10 minutes. And then bring this Rama mantra, and you have to say it loud enough so that your ears can hear. So obviously you should have a room in your house where you can do this. Don't do with your husband sleeping or a wife sleeping and you are yelling
And you are making these sounds. And he's saying, Sonde, tu chup kar, papi aadmi. मैं ध्यान लगा रही हूं राम दे विच ते तू कहना सो चा उठ तू भी कर. Don't do that. I don't feel any house is complete if that house doesn't have a meditation room. Unfortunately, you have a dining room, drawing room, lounge, lobby, bedroom, bathroom, safe room, closed room, open room, all rooms, but you don't have a meditation room. Some people in their bedroom will hang a small temple or hang some pictures. And they say, okay, this is my mandir. Well, if you have a space constraint, I won't say anything. But if you can, then why can't you have one, not very big, maybe a room which is sufficient for 2 people to sit at one time, maybe a small place, well ventilated, nice air and light should be there, or air conditioned, where you can sit down. अब अगर आपने अपने घर में ऐसा कोई जगह बना ली, ऐसा एक कमरा छोटा सा बना लिया, जहां और कोई चीज रखी ना जाए, कुछ ना रखो, खाली रखो उसको, और वहां बैठ करके आप इस अभ्यास को करें, या किसी और मंत्र को करें, या आप प्राणायाम करें, जो भी करें, एक ही जगह में करते जाएं. अब क्या होगा, जैसे किचन में खाना पकता है ना, तो किचन में अलग अलग मसालों की खुशबुएं टिक जाती. You know, the moment you enter any Indian home, you know it is an Indian home from its smell. And say if you go in a home where they eat non-vegetarian and seafood, you will know just by the smell which that house is having, because the carpets hold the smells, right? The spices give very pungent or good or nice smells, and they are physical, you can feel it. Similarly, the spiritual energy is not physical, so it won't be like a smell, but yet, wherever you sit down and do your spiritual practices, that place gets oozed with great spiritual and positive energies.